Hello students, today I am going to discuss on decimal. So, what is decimal number? Fractions with 10, 100, 1000, 10,000 in the denominator can be represented as decimal number. For example, 3 by 10 which is equal to 0.3. Here 0.3 is a decimal number. Another example, 415 by 1000 which is equal to 0.415. Here 0.415 is a decimal number. So mixed decimal. A mixed decimal that contains a full number, that means whole number means integral part, and a decimal, that is decimal part. For example, 45.38. Here 45 is denoted as integral part. Here this is decimal point, and 38. After the point you can read as 38. So 38 is denoted as decimal part. Then decimal places. The places after the decimal point are called as decimal places. Here one example is 0.491. Here after the decimal there are 3 digits. So 3 decimal places. 12.51. In 12.51 there are 2 digits after the decimal. So you can write 2 decimal places. Okay. Then place value system. Decimal numbers extend the place value system to the right of the ones place. Here we have taken from 1000 place. Then first one is 1000, then 100, then tens, then ones. After the ones we have started decimal point. Then tenth, hundredth, thousands, so on. Then expansion of decimal number. We express the decimal number in the expanded form by writing the sum of the value of each digit in the given number. For example, 2152.321. So, the place value of 2 is 2000. 2 into 1000, and place value of 1 plus 1 into 100, then plus 5 into 10 plus 2 into 1. After the decimal, the ones place you have to, after the ones place you have to start the decimal part. Then 3 into place value of 3 into 1 by 10 because its place value is 3/10. Then plus 2 into 200, 1 by 100 plus 1 into 1 by 1000. The place value of 1 is 1000. So, another example I have taken for you, 1153.06. Okay, and its place value of 1 is 1000, then 100 plus 5 into 10, 50 plus 3 into 1, and after the ones place we have to start decimal part. Then 0 into 1 by 10. 0 has no value for but we have written here 0 into 1 by 10 plus 6 into 1 by 100. 6 का प्लेस वैल्यू कितना होता है ना, 600th. सो इसको और एक लाइन में आप लिख सकते हो 1 into 1000 that is 1000 plus 100 plus 5 into 10 that is 50 plus 3 into 1 3 plus 0.06. ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है. The next term, writing fractions as a decimal number. आपको fraction दिया जाएगा और आप उसको decimal form में लिखना है. Write the digit of the numerator and put the decimal point such as to have as many decimal places as there are zeros in the denominator of the given fraction. For example, 15 by 10. आपको यहाँ पे 10 दिया गया है, उसका मतलब है कि डेसिमल प्लेस के बाद आपको 1 डिजिट लिखना होगा. दैट मीन्स 1.5.
After the decimal place, you have to insert one digit. Example 2, 7 by 1000. That means after the decimal place, you have to insert 3 digit because here 1000 is given to you. So 7 by 1000, 0.007, because numerator is 7. So you have to insert 2 more zeros. Another one, writing the mixed fraction as decimal. Mixed fraction को आप decimal में कैसे convert करें? चलो देखते हैं example. 7 whole 8 by 1000. Here whole means it is integral part, so you have to insert it in integral place. 7.8 by 1000 means after the decimal place you have to write 3 digit. Numerator is single digit 8. Then you have to insert 2 more zeros to convert 3 places. Example 3, 45 whole 3 by 10. Here 45 is in the integral place. Whole means integral place. Then you have to insert here 45. Then 0.3 because 3 by 10 is given to you. 10 means after the decimal place you have to insert only one digit. Then number name. नंबर नेम क्या होता है ना, आपको डेसिमल नंबर दिया जाएगा, उसका नंबर नेम आप कैसे पढ़ते हो वैसे ही लिखना. 16.03, बस 16.03. Another example, 28.317. So you have to write 28.317. Then equivalent decimal, the decimal whose value do not change even after we insert the zeros after the last decimal digit are called equivalent decimal. After all, I will say decimal, equivalent decimal means having same value. Decimal having same value. आपको जितने decimal दिया जाएगा अगर उसका value same है तो आप उसको equivalent decimal बोल सकते हो. For example 0.5, 0.50 and 0.500. These are the equivalent decimals. Why? Because after the decimal number, if you insert 0, then it has no value. Its value remain constant. That means 0.5 and 0.50. These are the equivalent decimal. Its value never changes. After the decimal place, after the decimal number, if you put more zero, then its value never changes. So these are called equivalent decimal. Then like and unlike decimal. What do you mean by like decimal? Now like decimals are the decimals having the same number of decimal places. For example, 4.1, 43.5 and 534.7. मतलब आपको डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए. आफ्टर द डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट विल बी सम. 4.1 here after the decimal single digit, 43.5 here also single digit, and 534.7 here also single digit. That's why these are called like like decimals. Then unlike decimals are the decimals having different number of decimal places, or you can say do not have same number of decimal places. For example 5.1, 6.27 and 3.482. Here decimal place is 1, decimal place is 2 and decimal places are 3. That's why these are called unlike decimals. Comparing and ordering of decimals. How to compare? First you have to convert the unlike decimal to the like decimal and then compare the integral and decimal part of the decimal number to arrange in ascending and descending order. First, look at the examples 7.234 and 7.326, 7.32 and 5.439. In this decimal number, you have to first convert this unlike to like. Here, decimal places are 3 decimal places, but here it is 2 decimal places and here it is also 3 decimal places. So you have to convert these 2 decimal places to 3 decimal places. Then how can you do it? Now you have to insert zeros on the right side of the decimal place. That means 7.234, 7.326, 7.320. After the decimal number, if you insert 1 0, then it will be like decimal and its value never change.
सो ये लाइक में कन्वर्ट हो गया, ये तो 3 प्लेसेस में है डेसिमल प्लेसेस। सो इसको अभी अरेंज करना है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है तो छोटा से बड़ा तक अरेंज करना है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हूँ। 7.326 which is greatest among all the decimal number, after that 7.320 and then 7.234 and 5.439। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है देन यू हैव टू राइट 5.439 देन 7.234 देन 7.320 देन 7.326। ओके, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अभी फर्स्ट चेंज द डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, पहले आपको अनलाइक से लाइक को कन्वर्ट करना है। आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ऐड करना है 52.038, 53.8 एंड 538 देन 0.5। सो फर्स्ट इसको लाइक में कन्वर्ट करना है। 538.000 हैविंग सेम वैल्यू, सो 053 53। जीरो क्यों डाला है? लेफ्ट साइड में जीरो डालने से भी इंटीजर का कुछ वैल्यू चेंज नहीं होता है, आपको एडिशन करने में तकलीफ नहीं होगा, इसीलिए मैंने इंटीजर की लेफ्ट साइड में भी जीरो डाल के सेम टू सेम पोजीशन में ले आया। और उसके बाद 0.800 हमारे पास 8 था, हम 2 जीरो इंसर्ट किए हैं। देन 52.038 यहाँ पे भी एक जीरो डाला हूँ, इसको लाइक में कन्वर्ट कर दिया। लाइक में करने के बाद ये रीग्रुपिंग एडिशन होता है, हम रीग्रुपिंग किए हैं। 0 + 8 8, 0 + 3 3 एंड 8 + 5 दैट इज 13, 3 यहाँ, और इंटीजर प्लेस को हमारा 1 चला गया कैरी होने के लिए। 8 + 1 इज 9, देन 3 12 + 2 14, 4 रखे 1 कैरी हो गया। 3 + 1 इज 4 + 5 9 + 5 13, 4 रखे फिर से 1 कैरी हुआ। 5 + 1 इज 6। सेम टू सेम you can do subtract 51.03 and 9.984. Here decimal places 2 and here 3 decimal places. So first this convert, you have to convert into like decimal. 51.030 and 09.984. You cannot subtract from 0 to 4, so you have to borrow from the near digit. So you can borrow 110, 10 minus 4 is 6, then here is 2, you can फिर से borrow करना है। 12 हो गया, 12 minus 8 is 4 and यहाँ 9, 9 minus 9 is 0, यहाँ फिर से 10, 110 borrow किया, 10 minus 9 is 1, 4 minus 0 is 4। then use of decimal applications, the write in decimal in the unit। आपको डेसिमल को यूनिट में लिखना है। कैसे? एग्जाम्पल 1 kg 10 ग्राम, 1 kg 10 ग्राम को केजी में लिखना है। आप सबको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड यू कैन राइट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। सो 10 ग्राम इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइट 10 डिवाइडेड बाई 10/1000 kg। सो इट्स डेसिमल 0.010 kg। देन add it 1 kg plus 0.10 kg, 1 kg plus 0.010. Okay, you can get 1.010 kg. Then example 2, 250 ml, इसको लीटर में लिखना है। 1 ml 1/1000 liter, so 250 by 1000 liter, so its decimal number is 0.250 liter because इट्स इंटीजर प्लेस में कुछ नहीं है, होल नंबर नहीं दिया गया है, तो इंटीजर प्लेस में कुछ नहीं रहेगा इंटीग्रल पार्ट में, बस 0.250 लीटर। थैंक यू।